सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकौ सर्वस्य पृथ्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेतकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्थित्वा यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयान्नज सद्धर्मं स्थापयान्नज। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री राधा रमण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय, श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय, श्री काष्ठभंजन देवनी जय। शतानंद उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवनस्यात्र पूर्यश्चर्यां तु ये नरः कुर्वन्ति ते लभन्ते वे चतुर्वर्गफलं नृप। स्वामिनारायणाय स्वाहा। राजोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुरश्चर्याविधिं त्वस्य श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने त्वत्तस्तं कृपया ब्रूहि मह्यं शुश्रूषवे नघ। स्वामिनारायणाय स्वाहा। शतानंद उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूर्वं तुभ्यं मयोक्ता ये कालः शुभफलप्रदः पुरश्चर्या समारंभ कर्तव्यस्तेषु भूपते। स्वामिनारायणाय स्वाहा। शुभे मुहूर्ते वरयेत् पूर्वोक्तेर्वक्तृलक्षणैः सम्पन्नान् ब्राह्मणान् राजन् षट् नवदशापि वा। स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्वेतानि नित्यधार्याणि तेभ्य वस्त्राणि चोर्मिकः हेमि दद्याच्चासनानि जलपात्राणि कम्बलान्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। शुश्रूषायां नियुञ्जीत तेषामन्यान् विजांस्ततः उष्णोदकं च पाकादि कुर्युस्ते चाङ्गमर्दनं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। देवालये प्रसिद्धे वा पुण्यक्षेत्रे पुरातने पुरश्चरणस्यारम्भ कर्तव्यो हरिमन्दिरे। स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्थापयित्वा वाथ हैमीं श्रीकृष्ण प्रतिमां गृहे कुर्युः पारायणं विप्रा यथा नियतम् अन्वहं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अष्टाधिकशतेन्नेव पुरश्चरणमीरितं पारायणानां नृपते सत्संगी जीवनस्य हि। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सप्ताहेनात्र कर्तव्यं नृपपारायणं वृतैः द्विजैरेकैकमेवं हि कुर्युः सर्वाणि अनुक्रमात्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूर्वोक्ताध्याय पूर्तौ च कार्ये विरतिष्ठते स्पष्टाक्षरं वाचनीयं भाषणीयं न केनचित्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। न वृतेर्ब्राह्मणैर्ग्राह्या दक्षिणा यस्य कस्यचित् न चान्यवस्त्राद्यपि वा गृहीतव्यं कदाचन। स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकैकस्मिंश्च सप्ताहे समाप्ते सति दक्षिणां स्वर्णमुद्रा
स्वर्णमुद्रात्रयं दद्यात् एकैकस्मै पृथक् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा नियतानां संहितानां पाठान्ते वाखिला अपि एकीकृत्यैव दद्यात् दक्षिणास्तु पृथक् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वर्णमुद्रात्रयं दातुम् असमर्थस्तु पुरुषः दद्यात् तदर्थं विप्रेभ्यस्तदर्थं वाल्पवित्तवान् स्वामिनारायणाय स्वाहा कनिष्ठां दक्षिणां दातुम् अपि शक्तो न यो भवेत् स विप्रान् श्रमयेन्नैव कुर्याद् अन्यत् स्वशक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरश्चरणकर्ताथ दिने यस्मिन् द्विजोत्तमान् वृणुयात् तद्दिने चासाम् अष्टाक्षरजपाय च स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्ववद् वृणुयाद् विप्रान् जपस्य च दशांशतः होमं कुर्याद् ब्राह्मणांश्च भोजयेत् तद्दशांशतः स्वामिनारायणाय स्वाहा शक्तो ग्रन्थस्य चैतस्य पुरश्चरणकारकः ग्रन्थेनानेन जुहुयात् पायसान्न घृतादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिश्लोकं प्रत्युवाच प्रतीतिश्री तदा नृप मृग्यासौ मुद्रया होमं कारयेत् क्रमतः सुधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा अशक्तो नामभिः सर्वमङ्गलस्तोत्र कीर्तितैः श्रीहरेः कारयेन् मन्त्रेण होमद्रव्यैः पुरोदितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा होमं कर्तुमशक्तस्तु द्वादशैव विधापयेत् पारायणानि होमार्थं तैरेव ब्राह्मणैर्वृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरश्चर्यारम्भदीनात् समाप्तिदिवसावधि पालनीयं ब्रह्मचर्यं विप्रैः सह यजमानकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा यथोक्तं तु फलं न स्यात् अन्यथेत्यस्य निश्चयः तस्मिंस्तु पालिते सर्वे सिद्ध्यन्त्येव मनोरथाः स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्य प्रसङ्गतः शिक्षा पैत्र्या अष्टाक्षरस्य च सर्वमङ्गलकस्तोत्र जनमङ्गलयोरपि स्वामिनारायणाय स्वाहा विष्णोर्नाम सहस्रस्य श्रीनारायणवर्मणः षोडशाक्षरमन्त्रस्य हरिप्रिय हनुमतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा स्कन्दपुराणस्य श्रीविष्णुखण्डगामिनः ग्रन्थस्य श्रीवासुदेव माहात्म्याख्यस्य भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरश्चर्याविधिं तुभ्यं समासेन ब्रुवे नृप चतुर्वर्गस्य सिद्ध्यर्थे हरिभक्तनृणां द्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र पाठसहस्रेण शिक्षापत्र्या उदीरिता पुरश्चर्या महीपालं सर्वेष्टफलदायिका स्वामिनारायणाय स्वाहा तद्दशांशेन जुहुयात् प्रतिश्लोकं यथाविधि आहुतीनां शते द्वे च सहस्राण्येकविंशतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा होमानुकूल्या भावे तु पाठाज्ञेया दशांशतः सर्वत्रेष विधिर्ज्ञेयः पुरश्चरणकर्मणि स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीकृष्णाष्टाक्षरमनोः पुरश्चरणमीरितम् अष्टलक्षजपेनैव होमस्तु तद्दशांशतः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरश्चर्या भवेत् सर्वमङ्गलस्तोत्रकस्य तु साशीत्येकसहस्रेण पाठानामिष्टदायिनी स्वामिनारायणाय स्वाहा एकलक्षाधिकेनाष्टसहस्रेण दशांशतः हरेर्नाम्नां तदुक्तानां होमो ज्ञेयो यथा विधि स्वामिनारायणाय स्वाहा जनमङ्गलकस्य स्यात् पाठा नामयुतेन तु पुरश्चरणमिष्टार्थदायकं नृपसत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा तदुक्तानां हरेर्नाम्नाम् एकलक्षेण भूपते होमस्त्वष्टसहस्रेण विज्ञेयस्तद्दशांशतः स्वामिनारायणाय स्वाहा विष्णोर्नाम सहस्रस्य पुरश्चरणमीरितं सर्वमङ्गलरीत्येव होमं तन्नामभीश्चरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीमद्भागवतोक्तस्य श्रीनारायणवर्मणः सहस्रेण तु पाठानां पुरश्चरणमीरितं स्वामिनारायणाय स्वाहा हरिर्विदध्यादित्याद्या विदक्षन्तास्तु तस्य ते श्लोका विंशतिसङ्ख्याकः सम्यग्रक्षाविधायकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा तैरेवैकैकयाहुत्या प्रतिश्लोकं दशांशतः होमं कुर्याद्विधानेन सहस्रद्वयसङ्ख्यया स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्सङ्गी जीवन प्रोक्तस्तोत्रादुद्धारितस्य तु षोडशाक्षरमन्त्रस्य भयभञ्जन मारुतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा
चतुर्लक्षजपेनैव पुरश्चरणमीरितं मन्त्रेणानेन राजेन्द्र होमं कुर्याद्दशांशतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीवासुदेव माहात्म्य पुरश्चर्याशतेन तु सार्धेनोक्ता च पाठानां होमोऽपि तद्दशांशतः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति संक्षेपतः प्रोक्तः पुरश्चर्याविधिर्मया सत्संगी जीवनादेस्तु भुक्ति मुक्तिफलप्रदः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्संगी जीवन माहात्म्ये शतानंद हेमंत सिंह संवादे पुरश्चर्याविधिनिरूपण नाम षष्ठोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ सत्संगी जीवन महात्म्ये सप्तमोऽध्यायः। शतानंद उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवन ग्रंथ दानं कुर्वन्ति ये जनाः लभन्ते ते सुखं राजन् निहामुत्र च वाञ्छितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। राजोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। ग्रन्थस्यास्य मुने त्वत्तः श्रोतुं दानविधिं त्वहम् इच्छामि ब्रूहि मह्यं तं सर्वज्ञस्त्वं यतोऽस्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शतानंद मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवनस्यास्य विधिं दानस्य वच्मि ते सम्पूर्णं स्यात् फलं येन भुवि तद्दानकारिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। मधोस्तु शुक्ल नवमी शुक्लेकादशिका तथा पूर्णिमा कार्तिकी मुख्यः कालो दानस्य कीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पौर्णमास्योऽथवा सर्वा एकादश्योऽखिला अपि कालः संकीर्तितास्त्वस्य व्रतोत्सवदिनान्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुस्तकं लेखयेदादौ सत्संगी जीवनस्य तु दृढपत्रं स्पष्टवर्णम् असम्मिश्रितपङ्क्ति च स्वामिनारायणाय स्वाहा। नवीनं शोधयित्वा तन्नुत्नैः फलकवेष्टनैः निबध्य स्थापनीयं च लक्षणं तस्य ते ब्रुवे स्वामिनारायणाय स्वाहा। पञ्चप्रकरणान्येव सन्ति यस्य शतत्रयम् एकोनविंशत्यधिकम् अध्यायाः सन्ति यस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा। सहस्राणि सप्तदश श्लोकास्तु षट्शतानि च अनुष्टुपसंख्यया सप्तविंशतिर्यस्य सन्ति स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदिमध्यावसानेषु धर्मवैराग्ययोस्तथा ज्ञानभक्त्यरूपाख्यानैः संभृतं यच्च सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। हरिलीला कथा व्रातामृतानन्दित सत्सुरं हरिकृष्ण परं यद्वे सत्संगी जीवनं हि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। चतुरंगे महावस्त्रे सौवर्णाष्टदलाम्बुजे स्थापयेद्दान दिवसे सत्संगी जीवनं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा। फलत्रयोन्मितं कुर्यात् सौवर्णाष्टदलाम्बुजं पुमानत्यल्पवित्तस्तु फलार्धप्रमितं तु तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः पूर्वोदितेर्मन्त्रेर्गीतवाद्यपुरःसरम् उपचारैर्यथा लब्धैः पूजयेत्तदुदारधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः प्रतिगृहीतारं पूजयेत् ब्राह्मणं नरः सत्संगी जीवनस्निग्धं हरेर्भक्तं जितेन्द्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वस्त्रैर्नवीनैः कौशेयैः स्वर्णमुक्तादिभूषणैः गन्धपुष्पोपहारैस्तं सम्पूज्य प्रणमेत् पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। निषिदेत् प्राङ्मुखोदाता ग्रहीतोदङ्मुखस्तथा संकल्प्य दद्या तत्थदो मन्त्रानेतानुदीरयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनेककोटिजन्मोत्थं कृष्णभक्त्यन्तराय कृत् दुरितं नाशमायातु दानेनानेन मेखिलं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवनं दिव्यं शास्त्रं निगमसंवितं ददामि विप्रवर्याय श्रीहरिस्तेन तुष्यतु स्वामिनारायणाय स्वाहा। मास्तु कृष्ण वियोगो मे मा वियोगोऽस्तु तत्सतां दानेनानेन सुप्रीतो हरिर्दत्तं मदीप्सितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युच्चार्य स तद्दत्त्वा ततो दद्या च दक्षिणां शक्तस्तु श्रद्धया युक्तो रौप्यमुद्राशतावरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अशक्तस्तु यथा शक्ति दद्यात् शाठ्यविवर्जितः दक्षिणायाश्चानुरूपं भोजयेत् ब्राह्मणांस्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो दद्याद्विधिनेतेन सत्संगी जीवनं पुमान् सा भास्व
शाश्वताभिमानेन गोलोकं प्रतिपद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा मनोभिवाञ्छितांस्तत्र भोगान् प्राप्नोति सर्वशः नाप्राप्यं विद्यते किञ्चित् तस्य कृष्णप्रसादतः स्वामिनारायणाय स्वाहा अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं निर्धनो धनमाप्नुयात् शास्त्रस्य तस्य दानेन विद्यां विद्यार्थमाप्नुयात् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति दानविधिर्मयोदितोऽस्य नृपते शास्त्रवरस्य शास्त्रदृष्टः यमिहाचरतां न क्वापि वाञ्छा भुवि चामुत्र च शिष्यते दुरापा स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवनमाहात्म्ये शतानन्द हेमन्तसिंहसंवादे तद्दानविधिनिरूपणनाम सप्तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ सत्संगी जीवन महात्म्ये अष्टमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा शतानंद मुनेर्यर्थ्यं वचः पीयूष सन्निभम् इति श्रुत्वा महानन्दो विनीतस्तं जगादसः स्वामिनारायणाय स्वाहा राजोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा मुने मयि त्वयोदारो दययानुग्रहः कृतः एतद्ग्रन्थस्य माहात्म्यं ज्ञातं मेऽञ्जस्वदुक्तिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिभातीति मच्मि ते श्रवणादस्य निश्चितं धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तिः स्यान्मुनिसत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वैनं यो भवत्सिद्धिं पुरुषार्थस्य सर्वशः आपन्नोद्यतु तद्वार्तां श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा स तस्येत्थं मनोहारि प्राणिश्रेयस्करं वचः श्रुत्वा तदुत्तरं प्रीतः प्रवक्तु उपचक्रमे स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मिन् क्षणे महाश्चर्यम् इत्यासीत् सदसि ध्रुवं यदा लोक्याखिलः सभ्या लेभिरे परमां मुदं स्वामिनारायणाय स्वाहा आसीद्देशान्तरायातस्तत्र कश्चन वाडवः सभायामास्थितः शान्तो विनीतो विदिताभिधः स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्रणम्य शतानन्दं प्राप्तानन्दभरान्तरः पुलकाञ्चितदेहस्तं प्राह गद्गदया गिरा स्वामिनारायणाय स्वाहा कृतार्थोऽहं कृतो नूनं त्वया करुणया मुने कालव्याल महाग्रास त्रास संसार मोचितः स्वामिनारायणाय स्वाहा दुष्टरैर्मत्कृतैः पूर्वं ध्वस्तं यन्नैव साधनैः तन्मे दुःखं त्वया ग्रन्थं संश्राव्यैव क्षतं मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा एतत् श्रुत्वा मुनिः भक्तो जातं धर्मान् निजेच्छया पश्यामि श्रीहरिं साक्षात् प्राकृतेर्वर्जितं गुणैः स्वामिनारायणाय स्वाहा उदारौदार्य सौन्दर्य सौकुमार्य महोदधिं मन्दहासविलासास्यं रमणीय गुणार्णवं स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्सङ्गिभिश्च मुनिभिः पूजितं पूर्णभावतः सद्गन्धपुष्पमालाद्य उपहारैर्मनोहरैः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रफुल्लेन्दीवरश्रेणि श्यामकोमलविग्रहं मनोहरं शरत्तारा श्वेतसारतराम्बरं स्वामिनारायणाय स्वाहा रम्यहास्यामृतं स्नावि शारदेन्दुवराननं प्रफुल्लनवपाथोज छदशालिविलोचनां स्वामिनारायणाय स्वाहा करुणामृतसम्पूर्णपारिप्लवनिरीक्षणम् आजानुलम्बि सद्बाहुं समविस्तीर्णवक्षसं स्वामिनारायणाय स्वाहा सञ्चनखमणिश्रेणि मृदुलाङ्गुलिमण्डितं वितर्जितस्थलाम्भोज द्युतिहस्ततलद्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा चित्रवर्णमणिस्वर्णकाञ्चीभूषणसत्कटिं चट्चटध्वानसम्राजद् रूप्यपादुकपत्कजं स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्णमण्डलविभ्राजत् मकराकृतिकुण्डलं सुवर्णरत्नकेयूरं विस्फुरद्वलयोर्मिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा तापनीयसुमञ्जीरसञ्जिताङ्घ्रिसरोरुहं कम्बुकण्ठलसन्मुक्ता सारहारविराजितं स्वामिनारायणाय स्वाहा चाम्पेयकुन्दमन्दारस्थलपद्मादिहारिणीं सुमनः शेखरं माल्यकर्णपूरमनोहरं स्वामिनारायणाय स्वाहा उदारामोदलोलालिप्रगीतललितस्रजं दधानं रुचिरे पाणौ स्वर्णयष्टिं मनोहरां स्वामिनारायणाय स्वाहा विचलत्कुण्डलोल्लासिकपोलयुगलश्रियं वक्रभुवं सुम्बिवोष्ठं
तिलप्रसवनासिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा ईदृश श्रीहरिप्रेक्षा पूर्वनिर्वृतमानसः अद्यापजन्म साफल्यं कृतार्थोऽस्मि ध्रुवं मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा कृत्वा तस्याचलां भक्तिं देहान्ते धाम चाक्षरं तस्यानन्दमयां दिव्यां लप्स्ये मे स्थिति निश्चयः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थमुक्त्वा शतानन्दं पूजयामास सादरं सगन्धाक्षतपुष्पाद्यैर्मूर्ध्नि तत्पदरजो दधौ स्वामिनारायणाय स्वाहा आचार्यो सततः प्रीत्या ववन्दे विनयान्वितः मुनिस्तथाखिलान् भक्तान् प्रत्येकं च सदहसितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्राप्तानन्दसन्दोह प्रविलीनमनास्ततः अनुज्ञाप्य शतानन्दं प्रययौ स्वनिकेतनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अथालोक्यस्तदाश्चर्यं तं प्रपच्छेति भूपतिः कस्मिन् देशे वसत्येष वाडवो मुनिसत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा किं तस्यासीन्महद्दुःखं तन्नाशाय महामुने किं च साधनं तेन विहितं दीर्घदर्शिना स्वामिनारायणाय स्वाहा एतत् शुश्रूषवे मह्यं वक्तुमर्हसि सत्तम यद्भवादृशशिष्याणां ज्ञातव्यं नावशिष्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ज्ञानं त्रैकालिकं गतः श्रीहरेः कृपया भूपं सप्राहेङ्गितविन्मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवनमाहात्म्ये शतानन्द हेमन्तसिंह संवादे तदितिहासकथने द्विजदृष्ट श्रीहरिस्वरूपनिरूपण नाम अष्टमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ श्री सत्संगी जीवन महात्म्ये नवमोऽध्यायः शतानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्य पुण्यमतेः पुण्यं वृत्तान्तं कथयामि ते अत्यद्भुतं महाबुद्धे शृणुत्वं स्वस्थचेतसा स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्तर्वेदाभिधो देशो देशानामतिपावनः भवत्यतिवरो देवैः सेवनीयो महर्षिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरुषा यत्र वर्तन्ते स्वस्वधर्मानुसारतः शूरः सत्यपरा धीरा योषः सन्ति पतिव्रताः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रिदशेन्द्रपुरस्पर्धि विद्यते तत्र भूपते काह्नसंज्ञं पुरं जुष्टं विभवैरमरप्रियैः स्वामिनारायणाय स्वाहा देवेन्द्रालय संकार्षैर्हेमशृङ्गविराजितैः स्वर्णजालेर्मणिस्तम्भैर्भवनेरतिमण्डितं स्वामिनारायणाय स्वाहा विराजमानमारामैर्रुचिराट्टालगोपुरैः समाट्टपङ्क्तिभिः कौष्ठैर्लसद्भिर्देवमन्दिरैः स्वामिनारायणाय स्वाहा कमनीयसभास्थानिः प्राकारेण समन्ततः विलसिद्गुल्मकक्षाभिस्तोरणैः समलङ्कृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा चातुर्वर्ण्यजनैर्जुष्टं स्वस्वधर्मानुवर्तिभिः वेदविद्भिः कृतेर्विप्रेर्वेदनादैर्विराजितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सरोभिर्मण्डितं रम्यैर्द्विजालिङ्कुलसङ्कुलैः कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रादिराजितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा उपशल्ये वरे यस्य स्वर्गङ्गापाविनी नदी वहत्येव जना यस्यां स्नान्तो भान्ति यथा मराः स्वामिनारायणाय स्वाहा कान्यकुब्जाभिदज्ञाते विप्रस्य तत्र तस्थुषः आसीन्माधवरामस्य पुत्रः कल्याणजिनृप स्वामिनारायणाय स्वाहा गर्गगोत्री यजुर्वेदी वेदाङ्गपारगः पारोक्षेण करोद्भक्तिं श्रीकृष्णस्य स नित्यदा स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्य प्राक्तन संस्काराद् विविधानां स्वजन्मनां भूतानां च भविष्याणां ज्ञानं साक्षात् जायत स्वामिनारायणाय स्वाहा यद्यत् कष्टमभूत्तीव्रं स्वेदजादिषु जातिषु भविष्यच्च तथा सर्वं दृश्यं तस्याभवन् नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा असह्यपीडं यत्कष्टं गर्भवाससमुद्भवं नानाविधं स्वयं भुक्तं तत्प्रत्यक्षयमवेक्षत स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रविष्टो यत्र निर्भुङ्क्ते विण्मुत्रादिमलास्पदे भुग्नपृष्ठशिरः कष्टं तीव्रं जन्तुरवाङ्मुखः स्वामिनारायणाय स्वाहा सौकुमार्यात् कृमिव्रात्तैः क्षत सर्वतनुः सदा श्वासावकाश अप्राप्तः
क्लेशान् मूर्छामुपेति सः स्वामिनारायणाय स्वाहा अशक्तः स्वाङ्गचेष्टायां रुद्धः पक्षीव पञ्जरे जाठरीयानलज्ज्वाला परिदग्धाखिलाकृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याद्यं स्वेन यत्पूर्वं भुक्तं कष्टं सदुसहं गर्भवासभवं सर्वं तत्प्रत्यक्षतया विदत् स्वामिनारायणाय स्वाहा सतामिश्रान्धतामिश्ररौरवाद्यः सहस्रशः निरया सन्ति ये घोरास्तत्कष्टं चाप्य बुबुधत् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्रोशन्तो यत्र ताड्यन्ते लोहदण्ड्यैर्यमानुगैः कशाभिर्मुद्गरैः शस्त्रैर्निस्त्रिंशाद्यश्च पापिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्पाटयन्ति नेत्राणि तेषां यन्त्रेषु ते मुहुः निष्पेषयन्ति रुन्धन्ति क्षारपङ्के जले च तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा पातयन्ति नगातुङ्गतप्ततैले क्षिपन्ति च निःसारयन्ति चात्राणि तेषां ते जीवतामपि स्वामिनारायणाय स्वाहा दाहयन्ति ज्वलद्वह्नौ तान् रुन्धन्त्यतिदुःसहे विषानलस्य ते धूमे छित्त्वा सीव्यन्ति तत्त्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा आश्लेषयन्ति तान् स्तप्तः प्रतिमाश्चायसीमुः तीव्रः सोपशदित्यादः यनन्ता यमयातनः स्वामिनारायणाय स्वाहा तेन तस्याभवच्चित्ते परितापो महान् नृप निशासु नाभवन्निद्रा त्रासव्याकुलचेतसः स्वामिनारायणाय स्वाहा नासीत् पुत्रकलत्रादो भोजनादो च कर्हिचित् व्यथार्तस्य सुखं तस्य विभवेष्वपि सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्तन्नाशनोपायान् सोपृच्छत् सर्वपण्डितान् तत्प्रोक्तानपि तान् कृत्वा तच्छान्तिं नाभ्यपद्यत स्वामिनारायणाय स्वाहा कुटुम्बं स ततः स्वीयं भवनं स परिच्छदं हित्वा जगाम निर्वीणस्तीर्थयात्राविधिस्सया स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रयागं स द्विजः काशीं जगन्नाथपुरीं शुभाम् अयोध्यां चित्रकूटं च पुण्यं वृन्दावनं ययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा रामनाथं हरिद्वारं कुरुक्षेत्रं च पावनं स प्रयात् पुष्करं तीर्थं पुण्यं च पुलहाश्रमं स्वामिनारायणाय स्वाहा अगाधसिद्धपुरं तीर्थं प्रभासं द्वारिकां तथा इत्यादिन्यर्तिनाशार्थं बहुक्षेत्राण्यगाद्धिसः स्वामिनारायणाय स्वाहा गंगा च यमुना रेवं सरयुं तपतिं नदीं गोदावरी प्रमुख्यानि प्रागातीर्थानि सद्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा जगत्प्रसिद्धतां प्राप्तास्तीर्थक्षेत्रेषु पण्डिताः गुरवो ये तथाचार्यास्तेषां सङ्गं चकारसः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वक्लेशनाशोपायांस्तान् विनीतः सोऽन्वपृच्छत विदधे च तदुक्तांस्तान् नापशान्तिं तथापि सः स्वामिनारायणाय स्वाहा निराशः सततो गच्छन्नति चिन्ताकुलान्तरः देशान् पश्चिमपाञ्चालान् आजगामयदृच्छया स्वामिनारायणाय स्वाहा जनेभ्यश्चाशृणोत् स्वामी नारायण विधापितं सोत्रदुर्गपुरे राम्यां श्रीगोपीनाथ मन्दिरं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वा तत्रत्यान् महासाधुंस्तेभ्यो हर्षपरिप्लुतः सोत्रागाद् अभवच्छान्तिस्तस्यैव गमनक्षणे स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्र कश्चिन् महान् साधुर्भवतीत्यवबुध्य सः संस्नायोन्मत्तगङ्गायाः श्रीगोपीनाथममेक्षत स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीगोपीनाथ संवीक्षा प्राप्त शान्तिर्मुदान्वितः अत्रास्तीति महान् साधुर्भक्तं कञ्चित् पप्रच्छसः स्वामिनारायणाय स्वाहा अब्रवीत् समुदो पृष्टो भक्तस्तेनेति तं द्विजं सत्कथावाचनारम्भो जातोऽस्मिन् दिवसे द्विज स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रोतुं सन्तः कथां पुण्यां सत्सङ्गी जीवनस्य च सभायाम् आस्थितः सन्ति सर्वे सत्सङ्गिनस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेत्यत्रागतः प्रीत्या सभामनुपविश्य सः सत्सङ्गी जीवनग्रन्थ कथां सुश्राव मत्कृतां स्वामिनारायणाय स्वाहा अशृणोच्च भवत्पृष्टं श्रद्धया सद्विजोत्तमः सत्सङ्गी जीवनग्रन्थ माहात्म्यं परमाद्भुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा एतस्येति श्रुतेरासीन् महाकष्टात् पुरोदितात् स निर्मुक्तः कृतार्थश्च प्रत्यक्ष श्रीहरिक्षणात् स्वामिनारायणाय स्वाहा
इत्येतन् निशमनलब्धसर्वसिद्धिर्वृत्तान्तं गदितमिदं मया द्विजस्य प्रीत्या ते श्रवणरताय शुद्धबुद्धे त्वत्प्रश्नोत्तरमपि जातमेतदुक्त्या स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवन शुभ श्रवणेन तूर्णं मोक्षार्थमेति परशर्मकरं मनुष्यः यत्प्राप्तये क्षितिभुजोऽप्यगमन्नरण्यं गच्छेत् त्रिवर्गमवनीश किमत्र चित्रं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो यश्चेच्छेत् ततो यं यं पुरुषार्थचतुष्टये तत्तत्सिद्धिमियात् श्रुत्वा सत्संगी जीवनं ससः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वधर्म ज्ञान वैराग्य भगवद् भक्ति संयुजा यश्चैकान्तिक धर्मेण प्रसाद्य पुरुषोत्तमं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इच्छेत् तदीय सेवायां स्थातुं तत्सिद्धिमाप्नुयात् सत्संगी जीवन ग्रंथ श्रुतेरेव स भूपते। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं हेमन्त सिंहस्तद्वाचं श्रुत्वा सुधोपमां प्रमोदं प्राप सभ्याश्च प्रापुरेव परां मुदं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् इच्छन्ति स्म शरीरिणः ये यमिह प्राप्तुं पुरुषार्थं स्वचेतसि। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवन ग्रन्थं तस्य तस्याप्तये शुभं ते शृण्वन्मुदा युक्ता स्वावकाशानुसारतः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र धर्मस्य संसिद्धिं धर्मार्थी प्राप निश्चितं योऽर्थार्थी तस्य संसिद्धिं सप्रपेदेऽञ्जसा द्रुतं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। कामसिद्धिं च कामार्थी मोक्षार्थी यश्च मानवः मोक्षस्य पुरुषार्थस्य प्राप सिद्धिं स सत्वरं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इच्छेदेकान्तधर्मेण प्रसाद्य श्रीहरिं च यः स्थातुं तदीयसेवायां प्राप तत्सिद्धिमेव सः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। हेमन्त सिंहो मोक्षार्थम् इमत्मिच्छन परं नृप यथा विधि स्वके गेहे वाचयित्वेन मा शृणोत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। मोक्षार्थस्य स संसिद्धिं प्रापत्वस्य महीपतिः शतानन्दास्य चन्द्रच्युत कथामृतसुनिर्वृतः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवन ग्रंथ माहात्म्यं सदसि श्रुतं शतानन्दमुनेर्वक्तार् यत्थे वेदं मया स्फुटं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगी जीवन माहात्म्याख्यो ग्रन्थस्तथा मया अयं विरचितः सम्यग् आत्मबुद्ध्यनुसारतः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदौ ग्रन्थमिमं श्रुत्वा पश्चात् सत्संगी जीवनं श्रोतव्यमिति मामाह शतानन्दमुनिर्वचः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इमं श्रोष्यन्ति ये भक्त्या पठिष्यन्त्यत्र मानवाः लप्स्यन्ति ते तु सत्संगी जीवन श्रुतिजं फलं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीहरेश्च प्रासादात्ते प्राप्स्यन्ति स्वेप्सितं सुखम् इति सत्यं पुनः सत्यं मुक्तानन्दो ब्रवीम्यहं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो दिव्याकृतिरक्षरे वरतरे माया परे राजते दिव्यानन्दमहागुणैकनिलयः सर्वार्तिरिक्तश्रवाः प्रादुर्भूय सधर्मभक्तिमतनोद् भूमौ दयावारिधिर्वन्दे धर्मजनिं सदैव सहजा नन्दं हरिं तं मुदा। स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमन्मङ्गलमूर्तिमार्तिशमनं मालां करे तुलसीं दक्षे सूक्ष्मवलक्षसान्द्रवसनान् या बिभ्रतां सर्वदा चारुस्मेरमुखाम्बुजं लसदुरः श्रीवत्सलाक्ष्माङ्गितं ध्याये भूषणभूषणाङ्गमनिशं श्रीस्वामिनारायणं। स्वामिनारायणाय स्वाहा।
योऽक्षरे परतरेऽक्षरमुक्तैः सेव्यमानचरणो रमणीयः स प्रभुर्विधिमुखेश्च नियन्ता मानसे वसतु मे हरिकृष्णः स्वामिनारायणाय स्वाहा योऽत्र पूर्णदयया कृतिधारी चिन्त्य चारुतरचित्रचरित्रः श्वाश्रिताखिलभयक्षयकारी धार्मिरेत्तु स हरिर्मयितोषं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्पदाब्जरतचित्तमिलिन्दा निर्जितेन्द्रियहयाखिलवेगः साधवः परहितानुरता ये सन्तु देहि सततं मयि तुष्टः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीहरिपदारविन्द परमानुग्रह भाजन मुक्तानंद मुनि विरचिते श्रीमत्सत्संगी जीवन माहात्म्ये शतानंद मुनि हेमंत सिंह संवादे तद इतिहास कथने द्विजवृत्तांत निरूपण नाम नवमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री नरनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रभवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अजन्मने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरि कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री बृहत्वतधराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री शुद्धाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सतप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री काल भैरवाद्याति भीषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जिताहाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिधैर्यवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री परमंसाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थकार्चिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री क्षमानिधे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निद्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ध्याननिष्ठाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तपःप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री भाषण्डोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रशांत मूर्ते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा असुर गुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिकारुण्यनयनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री महाव्रताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री
अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कालदोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सद्य समाधि सिद्धिकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा चतुर्भगफलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा बद्धरते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री पराजिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा समुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री उदाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सात्विधर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा वैष्णवक्रतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा निस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्यप्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री षडूर्मि विजय क्षमाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री निरहंकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऋजुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उपशंसिते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री विनयवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जातवेरिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सदाचार प्रियतराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वमंगल सद्रूपनाना गुण में चिचिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय इति स्वाहा श्री जन मंगल नामावली समाप्ता। बोलो स्वामी नारायण भगवान भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रमण देव देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज जनी की जय। जय। श्री मदन मोहन जी महाराज जनी जय। श्री कष्टभंजन देव देव की की जय। जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी
ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર વ્રાતા દ્વિજ કુલ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુલ તનુ ધારી પામર પતિત ઉદાર્યા પામર પતિત ઉદાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નવતમ લીલા કરતા વિનાશી પ્રભુ કરતા અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદ પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.